Welcome to another class of English. Yes, spoken English. Lots of students, after completion of their first year, the students are telling, so go for some professional classes, like spoken English classes or etc. etc. So, from today onwards, I'm gonna teach you, a serial 1 month course based completely in spoken English. So every day, yeah, good morning, Gita. Every day the classes will be 15 to 30 minutes. Yes, 15 to 30 minutes. And within those classes, we'll go for some activities and some PowerPoint presentation will be there. And after those PowerPoint presentation, we'll go for some activities. And you are to do those activities regularly, and you are to send those activities in my Telegram groups. So this is what the class will be. So today's class, as you can see on the thumbnail, it is on communication process and types, the usage of language. Exactly. So communication process and types and the usage of language. This is the class. Yes or no? So communication means what? What do you mean by communication? First of all, let's see what is communication. Communication means to share ideas. Yes, communication means to share ideas. So keep your notebook besides you and just write down what I'm telling. So what is communication? Communication means nothing but to share ideas. So exchange of thoughts is called communication. And whatever I'm telling, if you're getting, this is called English. This is called spoken English. Yes or no? And I'll talk to you later on about broken English. Yes, broken English is also there in English. Though, so communication means to share ideas, decides one day not to communicate with women and see how difficult life is. Yes or no? Suppose one day you will not talk with anyone else, then what will happen? Just think about it. One day, suppose you will just celebrate a Dom Day. Then which type situation you will face? What are the symbols and signs you will use to communicate with others? Yes or no? So this is what we call the magic of communication. Yes or no? So, and we smile at people and receive smiles. Look at this. Yes or no? We smile. When we smile at people, people also smiles at us. Isn't it? This is what we call the exchange of communication. Isn't it? And whenever we sit silently, we also thinking something. We contemplate ourselves. Yes or no? We sit silently and we contemplate. This is also called, yes, intercommunication. This is called intercommunication. So, and at the time we actually communicate with ourselves. When we are sitting alone, we are thinking something. At the time, we are communicating with ourselves. Exactly, we are communicating with ourselves. So I always tell my students, whenever you're thinking something, even if think in English, if you are thinking something, think in English. That it will help to boost your vocabulary. You can get some translate, you can translate some words, some sentences, some situations, whatever situation you're going across. So this is what we call, contemplation. And thus communication is inevitable and it has unparalleled utility and significance. That's why communication, if somebody will tell you, no, I'm not communicating with anyone, that means he's lying. Yeah, exactly, is lying. So wherever, whatever you are doing, if you are dreaming, that is also you are communicating. You are communicating with yourself. Your, your heart is communicating with yourself. Your brain is communicating. Yes or no? So you can't avoid communication. You can't avoid communication. Communication avoid kari paribo nahi tame. So the communication process. Let us see the communication process. Yes or no? Suppose there is a circle. Look, this is a circle. I have drawn a circle, communication. So then you'll see here, you'll get the message. This is a message. Yes or no? And look, sender is there. Yes or no? Sender is there. And feedback is there. Feedback is there. And receiver is there. This is communication process. This is what we call communication process. Yeah, sender, message. The sender tells something. This is your message. And the person who is standing in front of him receive it. It's called the receiver in our language.
And then comes the tone of feedback. Then comes the feedback, and it's from whom? The receiver. And this is from, the message is from the sender. This is what we call the communication. What? Yeah, exactly. Yeah, that's why these classes are there. That's why this is the class. Yes, So this is what? Sender, message, receiver, and feedback. This is what we call the communication process. This is called the communication process. बर्तमान आम देखा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एटा है कम्युनिकेशन प्रोसेस. माने सेंडर गोटे मेसेज देला, तापर मेसेजटा ये आइला, मेसेज किए पाइला? रिसीवर पाइला, रिसीवर ठारू फीडबैक होकर आसला. नहीं कि एटा हूँ कौन? एटा हूँ तुम फीडबैक प्रोसेसटा. दिस इज योर फीडबैक प्रोसेस. यस नो. बर्तमान पिले आम देखा ये कम्युनिकेशन करने भाषा दरकार ना नहीं. तो ये जो कम्युनिकेशन करने आम जो कम्युनिकेशन करवा ए कम्युनिकेशनटा केते प्रकार? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन? नहीं बर्तमान देखा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. देखा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन? ये कम्युनिकेशन को जिते बड़ा मैं ओहो शांतनु डोंट वरी सबू जिनस प्रथम प्रथम डिफिकल्ट होता है. प्रथम प्रथम सबू जिनस डिफिकल्ट होता है. धीरे धीरे अभ्यास हो कि नहीं सब इजी हो. ओके गोटे मासर कंटिन्यू क्लास 1 मंथ कंटिन्यूअस क्लास अच्छी. 1 मंथ कंटिन्यूअस क्लास 15 to 30 minutes जिते बड़े क्लास करिवो मु सेते बंद करी. आउ यू आर टू स्टे विथ मी. यस यू आर टू स्टे विथ मी. सो फर्स्ट वन इज वर्बल कम्युनिकेशन. प्रथम जिन कम्युनिकेशन टाइप देखिए पे वर्बल कम्युनिकेशन. प्रथमटा कौन? वर्बल कम्युनिकेशन. पिले वर्बल कम्युनिकेशन कहले कौन? वर्बल कम्युनिकेशन कहले वर्बल कम्युनिकेशन इज फॉर द डिवाइड इनटू रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन. या को दुई भाग रे हम भाग करि परिबा. कौन कौन? रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन. वर्बलटा को दुई भाग करा जाइबो. ठीक अच्छे. कौन कौन? वर्बल कैन बी डिवाइड इनटू टू. रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन. ठीक अच्छे पिले. रिटन कम्युनिकेशन कल तुम बुझी पार्थ. रिटन कम्युनिकेशन कौन पिले? रिटन कम्युनिकेशन हूँ आम जो लेटर फेटर लिखुचे इत्यादि. दिस इज योर रिटन कम्युनिकेशन. आउ ओरल कम्युनिकेशन कौन पिले? ओरल कम्युनिकेशन हूँ आम जो पाटे कथा होम जो नॉर्मली कथा मुझे तुम सहित कम्युनिकेट करुँच तुम सहित कथा हो. दिस इज कॉल्ड योर ओरल कम्युनिकेशन. जो इवन व्हेन द टीचर टीचेस द स्टूडेंट लिसन दिस इज योर व्हाट? oral communication. Yes or no? So verbal communication thila eta. So the oral communication refers to the spoken words in the communication process, and written communication can be either via mail or email. This is what yeah, communication. Tapare ala bile non verbal communication. 2 number kono non verbal communication. Non verbal communication. Non-verbal communication कौन? What is non-verbal communication then? Non-verbal communication include the overall body language of the person who is speaking. Body language of the person who is speaking. Suppose I am speaking. My body language, whatever I am doing now, this is non-verbal. This is part of non-verbal communication. I want to express, yes or no, what through my body language, my gesture and posture. Enunciation and pronunciation. This is what we call body language, isn't it? So overall body language of the person who is hand gesture, body movements, the facial expression, yes, facial expression, and also includes gesture like handshake, smile, hug, non-verbal communication. These are parts of what non-verbal communication. Everybody non-verbal communication of parts. So non-verbal communication. And signboards or even photographs, sketches and paintings. Signboards, sketches, photographs, these are also parts of non-verbal communication. एते जिनस कौन कौन रहिला पिले? जेमती बॉडी मूवमेंट्स रहिला, फेशियल एक्सप्रेशन रहिला, जेस्चर रहिला, हैंडशेक रहिला, स्माइल रहिला, हग रहिला, देन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन रहिला, साइनबोर्ड्स रहिला, फोटोग्राफ्स रहिला, स्केचेस रहिला. यस नो एंड पेंटिंग्स. एते सब जिनस दीज आर पार्ट्स ऑफ व्हाट? non-verbal communication. बर्तमान आम जो पिले भितर को 3 number कम्युनिकेशन, दैट इज योर ग्रुप कम्युनिकेशन. 3 numberटा कौन? ग्रुप कम्युनिकेशन. अच्छा पे ग्रुप कम्युनिकेशन कहले कौन? ग्रुप कम्युनिकेशन कहले
What is the group communication? Exactly, group communication includes many senders and many receivers. Many senders and many receivers. ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଥିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ଶୁଣୁଥିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ଜବାବ ଦେଉଥିବେ, that is called your group communication. ମନେ ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଥିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ଶୁଣୁଥିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ଜବାବ ଦେଉଥିବେ, that is your group communication. So when the students are in classroom and making many among themselves, there are many senders and many receivers. So that in a fine example of group communication, a group discussion or a meeting. A group discussion or a meeting. This is a fine example of what? Group communication. तो कौन को आजिबो? Yes, this is your group communication. तापरे आला पिले inter communication. तापरे कोन? Inter 4 नंबर टा होची inter communication. कोन? Inter communication. Ata inter communication टा कोन पिले? What is inter communication then? Inter communication basically involves two people. When we communicate with our friends, you are alone and your friend is alone, you two people are talking to each other, this is your intercommunication. दुई जन के भीतर जेतबे कथावार्ता हुए ताको कहै जाय intercommunication. कोन कहै जाय intercommunication. So basically involves two people, a sender and a receiver. Most of the communication in the world belongs to this category, and most of the communication in this world belongs to this category. Which category? Intercommunication category रे जाए. ठीक अछि, पहले नेक्स्ट देखिबा. नेक्स्ट सेसटा रहिला इंट्रा कम्युनिकेशन. कोन को जिबा देखो इंट्रा कम्युनिकेशन. इंट्रा कम्युनिकेशन ये सुनो. अच्छा, इंट्रा कम्युनिकेशन कहले कोन? पहले इंट्रा बोले हम जानि थिबा, हम जो माने साइंस पिला अच्छे इंट्रा गोटे वर्ड व्यवहार हुए. इंट्रा कहले वन. इंट्रा कहले वन. एटी गोटे प्रश्न उठे, सर इंट्रो जणे लोक निजे निजे केमती कथा ही परिबो ना कि? Question arises, spontaneously a question arises in our mind, how one can communicate with oneself. Nije nije soita kemti kotha hai pari, isn't it? So funny. So what happens? The term intra-communication, so intra-communication includes only one person. Intra-communication includes only one person. Yes or no? Intra-communication includes only one person, either sender and either receiver. Nije sunuchi, निजे कहूची बने. दैट मीन्स इट इज अवर थिंकिंग प्रोसेस. ये जानो इट इज व्हाट? इट इज अवर थिंकिंग प्रोसेस. देखो हम कौन कह माने अब जो बस था एकला बस था, वी आर जस्ट पेंसिव यू नो बैक एंड एंड वी आर थिंकिंग समथिंग. This is what we are thinking something. We may be thinking about someone else. We may be thinking about a situation. We may be thinking about a classroom situation. We may be thinking about it's raining outside. We may be thinking about my mother, whatever she's cooking now for me. Yes or no? So these are the situation whatever we're thinking, isn't it? So this is, yes, spelling. Ajit, you are good. This is spelling, but it's possible. So you might have seen people talking to themselves aloud. Even if people देखिथिबो पिला माने एमती भी लोक कहउछ चल जाउथो कथा होथो, ए तू कुआर जाउथो, तू कोन करबो, मोर देखिबी, मो जाउसी, मो देखिबी तो तू तोर एते साहस, तू मते मो पो को देख. Kind of talking, yes or no? This is what intra-communication. ता कोन कहबा हमें intra-communication. English रे किछि नै रे पिला, nothing is there in English. Yes or no? So intra-communication. Most people are bathroom singers. आ गोटे बढ़िया जिनस जानते समस्ते बाथरूम को पशिले गोटे गीत चलो ना कि गीत चले ना नहीं. नॉर्मली आम गीत गाऊँ ना, गाऊे कौ गीत? हाँ हाँ तुम नुआ गीत मैंने सब जानी आ कुठी डैश 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 ये सुनो. तो ये गीत सब तुम समस्ते गाऊ. तो दिस इज व्हाट किए शुणुची से गीत? Nobody is listening your song. So this is what, this is intra-communication, example of intra-communication. Yes or no? This is the best example of intra-communication. Yeah, it's very, very, very easy, the easiest subject in the world. English is nothing, it's just only a bloody language. Yes or no? So consent is the singer and also the listener. It means he is the sender and I the receiver. So whenever you are inside the bathroom, you are singing a song, Kutti Mohabbat. You are singing inside the bathroom. Nobody is listening to you. You are listening, you are singing. Yes or no? What happens then? तापर कौन हुए पिले? तमें शुणुच, तमें गाउच. ताहले सेटा कौन होची? इंट्रा कम्युनिकेशन. ताकू कहि जिबा हमें इंट्रा कम्युनिकेशन. तो एटा थिला पिले टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. कौन कौन थिला? वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, इंटर कम्युनिकेशन, इंट्रा कम्युनिकेशन. एटा थिला तुम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टाइप्स. Yes, निजे निज सहित कथा इंट्रा कम्युनिकेशन. बर्तमान आम देखा यूसेज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज व्यवहार.
ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ବ୍ୟବହାର ଆଜି ପଢ଼ିବା ନା କ୍ଲାସ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିବା ପିଲେ କାଲି ଆହୁରି ପଢ଼ିବା ସବୁଦିନ ବେଶୀ ବେଶୀ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ କମ୍ କମ୍ ନାଇଁ ୟୁସେଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କରିକି ସାରିଦେବା ୟେସ୍ नो ୟୁସେଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦେଖିବା ୟୁସେଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ यूसेज ऑफ लैंग्वेज हैज 4 यूजेस पिले लैंग्वेज हैज 4 यूसेज लैंग्वेज रा केतरा यूज अछि लैंग्वेज रा केतरा यूज अछि लैंग्वेज हैज 4 यूसेज चारिटा व्यवहार अछि लैंग्वेज प्रत्येक भाषार चारिटा व्यवहार अछि चारिटा व्यवहार सेटा आमे कम्युनिकेशन रो टाइप गले वर्तमान भाषार व्यवहार देखिबा कोन कोन ताकू शॉर्ट एंड सिंपल को जाय एल एस आर और डब्ल्यू मन रखा लैंग्वेज हैज 4 यूसेज प्रत्येक भाषार चारिटा व्यवहार सब बढ़िया जिनस देखा कौन कौन या एल फॉर लिसनिंग एस फॉर स्पीकिंग आर फॉर रीडिंग एंड डब्ल्यू फॉर या इट्स राइटिंग लुक एट दिस दीज आर द 4 यूसेज ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज चारिटा व्यवहार लैंग्वेज प्रत्येक भाषार चारिटा व्यवहार कौन कौन लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग ये जगह मुझे गोटे जिन प्रूफ करदे पिले यू डोंट नीड ग्रेमो एक्ट अल टू स्पीक लैंग्वेज से विषय आम परवर्ती क्लास मान कथा क्लासटा बढ़ी बढ़ी जाऊ सबुदिन गोटे नुआ नुआ जिन पढ़ुवा नुआ गोटे इंटरेस्टिंग जिन सब आलोचना कर ठीक अच्छे तो बर्तमान ना बर्तमान ये कहीकि आम क्लास सारा सो लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग LSRW बहुत बढ़िया पिले लिसनिंग लिसनिंग कहले कौन शुणा शुणाटा गोटे वाइटल पार्ट लैंग्वेज गोटे वाइटल पार्ट हूँ कौन शुणा ये सुनो शुणी आम जमी ओडिया शिखीचे आम ओडिया शिखेचे अरे ओडिया आमको किए शिखेची ओडिया आमको किए शिखेची तुम जो ओडिया कह तुमको किए शिखेची तुम व्याकरण विषय जाच ओडिया व्याकरण तुम जो पंचम श्रेणी पढ़ुल तृतीय श्रेणी पढ़ुल तुमको किए शिखेची शिखेनी ना गोटे इंग्लैंड गोटे पिला जो इंग्लीश कहे ताकू कौन किए माने छोटिया पिलाटा 7 वर्ष पिला ताकू कौन किए व्याकरण शिखेची नाई ना तो यहाँ गोटे भाषा सिंपल लैंग्वेज इट्स अ सिंपल लैंग्वेज आई एम अगेन टेलिंग एटा गोटे साधारण जिनस भाषा गोटे साधारण जिनस आमको शुणी शुणिकी आम मन रही जाए आम देखी देखिकी शिखी जाऊ मु सब क्लास रे कहे दुईटा जिनस द कीज 2 कीज आर देयर टू लर्न इंग्लिश इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश दुईटा जिनस कौन कौन गोटे ऑब्जर्वेशन आ गोटे प्रैक्टिस observation practice observation these are the 2 keys दुईटा कौन कहते यस व्हाटएवर चाबी तुम अनलॉक कर पार भाषा को अनलॉक कर पार दुईटा जिनस ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस तो पहले प्रथम कथा देख लिसनिंग कौन पिले सो एटा हूँ सब इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम मन रहा ये जो लिसनिंग आउ रीडिंग टा रहिला लिसनिंग टा आउ रीडिंग टा रहिला इनपुट सिस्टम आउ यस देन दिस राइटिंग एंड रीडिंग ये दुईटा रहिला तुम आउटपुट गोटे जिनस देख पिले कौन लिसनिंग आउ रीडिंग ये दुईटा कौन पिले इनपुट आम भितर को जीव कौटा लिसनिंग एंड रीडिंग आउटपुट कौन आसो बाहर को कौन बाहर स्पीकिंग राइटिंग कथा बुझीगला कथा तुम जिते डाएट खाइब तुम मसल से स्ट्रंग हो जिते एक्सरसाइज कर तुम मसल से स्ट्रंग हम ताहले आमको कौन दरकार है एक्सपोजर दरकार ना नहीं बर्तमान आम इंग्लीश जानापी आमको कौन दरकार एक्सपोजर प्रथम इनपुट करवा दरकार ताहले तो आउटपुट बाहर ना प्रथम आम कौन करवा दरकार इनपुट करवा दरकार भितर को गले तो बाहर को बाहर रे ये सुनो प्रथम आमको इनपुट दरकार वी नीड इनपुट फर्स्ट ऑफ ऑल ताहले आम आज क्लास रे दुईटा जिनस मुझे कहबी लिसनिंग एंड रीडिंग उपरे फोकस कल तुम स्पीकिंग आउ राइटिंग ऑटोमेटिकली हो ठीक अच्छे एति मात्र आज क्लास रे आम एति शिखा दो वी आर टू फोकस ऑन लिसनिंग वी आर टू फोकस ऑन लिसनिंग
एंड रीडिंग बेसी नहीं हाफ एन आवर एवरीडे मु बेसी समय केबे पिला को मागे ना कारण पिला को बोर करिवार मोर इंटेंशन नहीं मु सब पिला को कहे जस्ट डिवोट हाफ एन आवर अध घंटा दिन को दियो 20 मिनिट्स 10 20 मिनिट्स सॉरी 20 मिनिट्स यस कौन करवा आम 15 मिनिट्स शुणा आ 15 मिनिट्स पढ़ा 15 मिनिट्स प्रत्येक दिन जस्ट टेक ए रेजुलेशन संकल्प नेबा समस्ते जे प्रत्येक दिन मु एटलिस्ट 15 मिनिट पढ़ी इंग्लिश को 15 मिनिट पढ़ी बड़ पार्टी पढ़ी जहाँफल मुझे शुणी बड़ पार्टी कहले मुझे बड़ पार्टी पढ़ी मुझे शुणी ये सुनो एवरीडे एटलिस्ट 15 मिनिट्स आई लिसन गोटे भल स्पीकर को शुणी गोटे न्यूज चैनल रू शुणी 15 मिनिट आ 15 मिनिट मुझे पढ़ी दुईटा जिनस आज जो जेते जो 12-15 जन पिला अच्छे समस्ते मन रख जे आमे आज स्टार्ट करवा एंड आई स्वेयर आई प्रॉमिस आफ्टर 1 मंथ गोटे मास पर तुमर इंग्लिश ठीक अच्छे पिले तो आज एतिकी परवर्ती क्लास रे आमे देखिबा मेथड्स टू लर्न लैंग्वेज एंड टिप्स टू स्पीक इंग्लिश बेटर हाँ आईएस रो मु वीडियो भी अपलोड करदेवी डोंट वरी मु करदेवी ठीक अच्छे तो आमे मेथड्स टू लर्न लैंग्वेज एंड टिप्स टू स्पीक इंग्लिश बेटर तो दुईटा क्लास जीवो एटा काली आमे मेथड्स टू लर्न लैंग्वेज को माने पढ़िबा पाई कौन कौन सब अच्छी से विषय आमे काली क्लास रे कथा हवा काली 11:30 रे देखा हबो ओके बाय बाय स्टे हेल्दी स्टे सेफ।